Moderators, please note Sir has joined and we can start the Yes, meeting ma'am. now. Okay. Cyberbullying is the use of internet and related technologies to harm other people in a deliberate, repeated, and hostile manner. Good morning, everyone present here. I, Ashmi Sharma of semester 5th, and my co-anchor, Aishwarya Menon of semester 7, are going to moderate this session. As you all are aware that we have gathered here to discuss and being guided on cyber safety by our esteemed speaker. So let's begin. Internet safety, online safety, cyber safety, or e safety is trying to be safe on the internet and is the act of maximizing a user's awareness of personal safety and security risks to private information and property associated with using the internet and the self protection from computer crime. In this era of increasing internet users worldwide, over 45% have announced that they have endured some sort of cyberbullying or harassment. Over the past decade or so, the internet has seen a meteoric rise in coverage. However, the internet has its drawbacks as well. The internet is flush with dark alleyways and corners with unethical actors ready to pounce on the smallest opportunity they get to dupe an unknowing user. Such actors can steal someone's identity, important financial deals, professional work, or even password and blackmail them with the information they have procured. The field that deals with staying safe on the internet is known as cyber safety. It can be defined as a set of measures meant to promote the safe usage of internet and prevent exposure to internet malware, fraud, or theft. Learning about cyber safety helps understand how different types of cyber attacks can impact use and what measures can we take to defend ourselves against it, making the entire internet user community aware of cyber safety measures and keeping them updated with the pitfalls and risks they are exposed to may be a step to curb cybercrime. So moving forward, I would like to call Ayushi Joshi of semester 1 for such mantana. वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे काट अंधे उर के बंधन स्तर जननी ज्योतिर्मय निर्झर काट अंधे उर के बंधन स्तर जननी ज्योतिर्मय निर्झर कल शुभेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वर दे वर दे वीणावादिनी वर दे नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वर दे वर दे वीणावादिनी वर दे वर दे वर दे पुस्तक धारिणी वर दे वीणावादिनी वर दे वीणावादिनी वर दे
morning, everyone. I, Aishwarya Menon from 7th semester, welcome you all in today's webinar. Today, we are delighted to have Honorable Dr. C.B. Sharma, retired IPS officer. He has done MSc in Physics, Microwave Electronics, MA in Philosophy. He has done LLB, PhD, Diploma in Cyber Law. He is a certified lead auditor ISMS. He has significant experience in crime investigation and cyber crime investigation and cyber security. His tremendous skills in both technical and analytical fields has gained him a variety of assignments such as SP Jaipur City, SP Jaipur Rural, SP Dausa, SP SCPB Computer and Cyber Police Security Station, DYIGP Law and Order, DYIGP Intelligence of other during his office. He is Governor's nominee to the Board of Management, Sardar Patel University of Police Security and Criminal Justice, Jodhpur, Rajasthan. He has been former Secretary, All India Service, Rajasthan. He has been an ardent police officer all through his career and has won himself many accolades, including President's Police Medal for distinguished services and Police Medal for meritorious services. He is the CEO of Dr. CBS Cybersecurity LLP, which was established in 2015 with the vision of leading individuals and organizations towards the safe use of technology. Dr. CBS Cybersecurity Service LLP is committed to deter smart and faceless crime by creating awareness, sensitizing people, and giving solutions and services through a comprehensive research based approach towards cybersecurity. Now I would like to call and request Principal Ma'am Dr. Vartika Arora to welcome our honorable guest Dr. C.B. Sharma. Thank you, Aishwarya. Good morning, everyone present in this virtual room. Namaskar, sir. On behalf of Rajasthan School, am I audible to all? Yes, ma'am. Okay. So, on behalf of Rajasthan School of Law for Women and entire faculty and management, I welcome our guest speaker for the day, Dr. C.B. Sharma, sir. Sir is the Chief Executive Officer of C.B. Sharma Cybersecurity Services. Sir is a retired IPS officer. As rightly said by the moderator, there are many laurels attached to the work done and qualification acquired by Sir. So talking about computer security, since past 1.5 years during this pandemic time, use of internet has been raised tremendously. And as we all know, everything has its dark sides. And with internet, the risk is very high. So war no doubt has come closer, but along with it brings its own hazards. And we need to be aware, prepared and vigilant. And to make ourselves vigilant and safe while using internet, Sir Dr. C.B. Sharma is here with us to spread awareness about cyber security among us students. So I welcome you, sir, once again to speak on the topic of cyber safety and legal mandate. Welcome, sir. And also I welcome everyone attached to CB Cyber Security because since the day we planned this event and up to now, and it would continue further also, I know, there is a continuous support and contact from Sir's office for every minute thing. And this is a very appreciable thing क्योंकि इतने लेवल पे आके इस तरह से कोऑर्डिनेट चीजें करना, so I'm so thankful to you. Abhi Yogesh sir say I am continuously in touch, so I welcome, if Yogesh sir has also joined, I welcome you sir also. Over to you sir. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. Respected Principal Madam Dr. Vartika Arora ji, faculty members of Rajasthan School of Law, Professor Dr. Yogesh Chandraji Sharma, convener on behalf of Dr. CBS Foundation, faculty members of Dr. CBS Cybersecurity Services, dear students, and all and everybody online connected. A very good morning to all of you.
Today, the topic of our discussion is cyber safety and cyber mandate. We all know how cyber is important in these days because the life is based on the internet. Is the screen visible? Yes, sir. Hello? Yes, sir. We can see your picture, not the PPT. Is anyone able to see that? No, ma'am. No, sir. You are visible, but not the PPT. Sure. Now is it visible? Yes, sir. Yes, sir, it's visible now. Yes, sir. Yes, sir. So today's topic of discussion, the interaction is cyber safety and the legal mandate. Since the law student is more interested in knowing the legal mandate of cyber safety, he or she wants to know what is cyber safety and what are the legal mandate. So if we start with cyber safety, there are two words, cyber and safety. So what is cyber we will discuss, and then what is cyber safety and what is cyber security and what the law student must know. Law student must know the ingredients of the offense. What are the ingredients and what are the different parts in which it is to be submitted in the court of law. So he is interested, he or she is interested in that. So how do we define cyber? Cyber, the definition of cyber is it is the name given to some characteristic of culture of computer technology. That is there. So what is the culture of which culture? The culture of computers, then other attached things, the information technology, virtual reality, augmented reality, all these names of related with the computer field or the cyberspace, they are the computer. Means the definition of computer, the cyber is given. So if you define cyber, cyber is the name given to the characteristic of culture of computers, information technology, virtual reality and augmented reality, artificial intelligence and machine learning, encryption and cryptography, deep web and dark web and other computer sources. ये इसकी definition है cyber की. The definition is cyber is the name given to the characteristic of culture of computers, information technology, virtual reality and augmented reality, artificial intelligence and machine learning, encryption and cryptography, deep web and dark web and other computer sources. So we will discuss all these, what is virtual reality, augmented reality. The law student must know the ingredients of virtual reality, augmented reality, how it is working and all that. So first we come to the what is cyber safety. What do you mean by cyber safety? Cyber safety, we may call it e-safety also, online safety also, the internet safety also. We want safety on the internet. So what we mean by internet safety means we protect ourselves and who is the user of internet and the computer resource. He should protect himself from cybercrime and reduce the risk of security. So again it comes, what is cybercrime? As the Ms. Sharma, she elaborated about the cybercrime. But what is actually cybercrime? Which is law student must know. What are the ingredients of cybercrime? So cybercrime has two ingredients mainly. One, it is an illegal offense. Number two, help of or presence of cyber and computer resources
So the computer resources are either the tool or the target or incidental to crime. कोई भी जब अवैधानिक कार्य होता है, any illegal act in which computer resources either a tool, आप अपनी गाड़ी के अंदर टूल बॉक्स रखते हैं, means with the help of that you change your tire and you do all the things. So with the help of computer resources, if it is helpful in or somebody takes the help of computer resources to commit an illegal act, it is a cybercrime. Similarly, somebody attacks the computer resources, it is also a cybercrime. Or suppose it is not taken as the tool or a target, but anyhow it is incidental to the cybercrime, means it is present on the scene of crime. Then also it is classified as the cybercrime. So if you define cybercrime, so what is cybercrime? It is the illegal use of computer, computer system or computer network or computer resources. What we mean by computer resources? It includes all computer system, computer network, and it includes the software as well as all hardware. That is the computer resource. Or some communication device for illegal activities where any of the computer resources either a target or a tool or is incidental to crime. So what type of computer crimes are committed these days, or the cyber crimes are committed these days? You daily see in the newspapers. Today I was looking at the newspaper in the morning. So there was a news. The TikTok has the game of slap a teacher. So in some foreign country, the girl went to the teacher's home. The teacher opened the door and the girl slapped the teacher. So that is the TikTok game. This is very humorous type of crime. Now the other crimes, honey trap. This is also today or yesterday's news. So विधायकपुरी थाना पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में महिला को गिरफ्तार किया. पंजाब नेशनल बैंक के विशेष अधिकारी ने. All these are the cyber crimes. This is law enforcers worried about deep nude makes it. What is this? These days there is a challenge of sari challenge or couple challenge where people invite the photos. They say जो बेस्ट होगा उनको कुछ वो देते हैं कि 10 दिन का ट्रिप बार देंगे. So they get the data bank of all the photos and then the photos are processed in the deep nude webs where the close photo is within no time it comes out as the nude photo, and then the morphing and they can be made of any nonsense type of photo, and then by sending these people demand money or other things. The other thing is पुलिस ने युवती का वीडियो बनाकर पुलिस मामले को दबाने में लगी. यहाँ पे लड़की साथ में पढ़ने जाती थी, पास का ही पड़ोस का लड़का था, दोस्ती हो गई. दोस्ती के बाद में उसका फोटो ले ली, फोटो लेके वीडियो बना के और उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया. आजकल ये बहुत सारे केसेस हैं, आए दिन केसेस रिपोर्टिंग में होती रहती हैं, कई अनरिपोर्टेड ही भी रहते हैं, कई उसके विक्टिम भी बन जाते हैं. फोटो लिया, फोटो का को न्यूड बना के मॉर्फिंग से करके फोटो बना के और सब भेज दिया कि भाई टेलीफोन नंबर सारा दे दिया कि आप उनसे बात कर सकते हैं, फ्री टाइम में अवेलेबल हैं, सारा इस तरह के नॉनसेंस कर देते हैं और अगला आदमी बहुत परेशान होता है. कई बार ये रहता है जैसे रिश्ता तोड़ा प्रेमिका ने तो बॉयफ्रेंड ने फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पे डाल दी और बता दिया सेक्स वर्कर. महिला संचालित कर रही है साइबर जालसाजी का गिरोह, पुणे में खुलवा रखा था बैंक अकाउंट. अहमदाबाद विमेन्स फोटो मॉर्फ्ड ऑन सोशल मीडिया, FIR फाइल्ड.
आपने फोटो को मॉर्फ कर दिया और मॉर्फ करने के बाद में सोशल मीडिया पे डाल दिया, वो वायरल हो जाएगा। आपके पास जिसका भी डाला है फोटो, जिसका किया है, उसके पास अनगिनत टेलीफोन आते रहेंगे, बार बार तंग हो जाएंगे। राजस्थान मैन हेल्ड फॉर नेस्टी सोशल मीडिया पोस्ट, ये बीकानेर की खबर आई थी। चाहत, नैना और निराली 3 नाम से दोस्त बन के 58 इयर्स के ओल्ड मैन से चैटिंग करके 2 साल में 8 लाख रुपए ठगे। उसके बाद में किसी के संपर्क में आया और उन्होंने कहा कि साहब इस तरह की प्रॉब्लम है, पुलिस के अंदर रिपोर्ट करवाई। इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा कि जो अक्यूज था, जो ये काम कर रहा था, जो जिसने 8 लाख रुपए ठगे, वो उस ओल्ड मैन के लड़के का मित्र ही था और बॉय था, वो लड़की नहीं थी। लेकिन उसने चाहत, नैना, निराली अलग अलग अपने आईडी बना ली, लड़की के नाम से फोटो लगा दी अलग अलग और उस हिसाब से किया। तो एक आपने सुना होगा बॉयज लोकर रूम और गर्ल्स लोकर रूम, ये इस तरह के क्रिएट करते हैं जिसके अंदर आप बॉयज लोकर रूम क्रिएट कर लिया और उसके अंदर से यंग बॉयज एंड गर्ल्स सेक्सुअल असॉल्ट के लिए वो करके और बनाते हैं। तो दोनों ही तरह के बॉयज लोकर रूम और गर्ल्स लोकर रूम, इसकी ट्रेजेक्टरी क्या है साइबर क्राइम? कई बार ये रहता है कि साइबर क्राइम के अखबार में पढ़ते हैं, आपको यू गेट वरीड, यू आर फ्राइटन्ड, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर देयर। पेरेंट्स भी बड़े परेशान रहते हैं, तो क्या किया जाए? सब ये कहते हैं it is because of the internet and the computer resources, means your smartphone, your computer, your laptop and the internet. 10 साल पहले तो ये रहता था कि बच्चों को जब कंप्यूटर दिलाते थे, टैबलेट में वो दिलाते थे या आपके मोबाइल दिलाते, तो उनको ये कहते हैं इंटरनेट एक्सेस मत करना, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर सारी नॉनसेंस चीजें आती हैं, सब वो करके। लेकिन आज के दिन यदि आप इंटरनेट एक्सेस नहीं करो तो इट इज नॉट पॉसिबल। आप किसी भी स्टेज पे आप चले जाइए, चाहे गांव के अंदर चले जाइए, इन द विलेज, आपके जो सारे के सारे बैंक के अकाउंट्स हैं वो ई बैंकिंग हो रही है। सारे खाते आपके पैसे के अंदर सीधे ई बैंकिंग से आते हैं। इंटरनेट गाँव के अंदर पहुंच गया है। अब बच्चों के प्राइमरी स्कूल से लेके सीनियर उसके या रिसर्च में भी बिना इंटरनेट के काम नहीं चलता। तो इंटरनेट के बिना तो काम चलेगा नहीं, नए कंप्यूटर के बिना काम चलेगा। तो ये समझना है इसको। देखिए, साइबर जो सिक्योरिटी के लिए अपने को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये साइबर क्राइम होता कैसे, इसकी ट्रेजेक्टरी क्या है। इसमें विशेष करके आपके चूंकि विमेन कॉलेज हैं और आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने एक उस तरीके से कि विमेन एंड चाइल्ड के लिए स्पेसिफिकली क्या ट्रेजेक्टरी मतलब कहाँ से स्टार्ट होके एंड वेयर डज इट रीच। सो इट स्टार्ट्स विद क्रिएटिंग ऑफेंसेस, offensive, threatening, harmful and provoking messages. So you get the provoking messages or photos or videos or animation or posts or any other content by the offender for the purpose of creating either psychological, physical, sexual or economic harm to the victim. That is the basic fundamental. Then threatening messages or photos which are sent to the victim are connected to the computer or the communication device. Either they are connected to the computer or to the smartphone of the victim via internet. Then messages, often photos, videos, defamation content or pornography or bullying or stalking or any other such message received causes severe emotional distress or fear of harassment, blackmailing, abuse or outing or trolling, fake news, flaming or trickery or grooming to cause threatened violence targeted against a woman or child. ये इसका ट्रेजेक्टरी यानी स्टार्ट होता है क्रिएटिंग ऑफेंसिव मैसेजेस से एंड इट एंड्स इनटू द साइबर क्राइम, ऑल सॉर्ट ऑफ। अब इसके अंदर
आप यदि ये देखें कि ये तो है, दिस इज द ट्रेजेक्टरी वी नो, बट what types of equipments and what types of softwares they are used in that. So there are only 5 steps. That is the pattern of gendered juvenile cybercrime. What do you mean by gendered cybercrime? Gendered cybercrime means the victim is a woman of any age, girl or woman. So that is the gendered. And juvenile means the victim is a child. Below 18 years, who has not attained the age of 18 years. So the cyber crime means it is with the help of computer resources or attack the computer resources or computer resources incidental to crime. It is available there. So the first step is culprit exploits the security vulnerabilities of computer or smartphone of the woman or child and gets unauthorized access to the computer or smartphone of the victim. So first he attacks the smartphone of the woman or child, or we can say smartphone of the victim, and gets unauthorized access into the computer smartphone. है क्या कि साइबर क्राइम की एक बेसिक चीज ये है कि until unless the victim, the culprit reaches to the vulnerabilities of the victim, वो कोई क्राइम नहीं कर सकता. So सबसे पहले वो सर्च करता है कि what are the vulnerabilities of the victim, और वो जो vulnerabilities है वो कहाँ मिलती है. vulnerabilities देखिए कोई ऐसी नहीं कि कोई vulnerabilities आपकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन, your photo is your vulnerability, your sister's photo is a vulnerability, your friend's photo is a vulnerability, आपके कोई कमेंट्स हैं, आप अपने फैमिली के बारे में जो फैमिली के डिटेल्स हैं वो वल्नरेबिलिटी हो सकती है. आपके फैमिली मेंबर्स का कोई भी आपकी जो व्यक्तिगत सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है, दैट इज वल्नरेबिलिटी. वो उनको कहाँ से मिलेगी. अब आपको जैसे ये है कि आप उसको कंप्यूटर में या स्मार्टफोन के अंदर एक्सेस हो गई तो वहां से उसके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता है और वहां आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन डाल रखी है. So culprit exploits the security vulnerabilities of the internet of the victim and gains access in the internet of the victim. क्योंकि जब तक इंटरनेट से नहीं जुड़ेगा, जब तक आपके वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, तो after getting access to the internet of the victim, culprit accesses the social media networking sites of the victim and thereby gets unauthorized access into the personal information available on the social media platform. And once he gets access into the social media platform, culprit collects the personal information of the victim from a social media sites and exploits them. And finally, he exploits the vulnerabilities, the personal information which are the vulnerabilities, and sends these harmful, threatening, or blackmailing messages or contents, which result in or likely to result in the psychological, social, physical, sexual और economic harm और suffering to the victim. ये इसका एक पैटर्न है, ये इसकी एक ट्रेजेक्टरी है. तो जब भी अपन सेफ्टी की बात करते हैं तो अपने स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ और स्टेप फिफ्थ, इन पांचों के ऊपर आपको वो करनी पड़ेगी. अब देखिए आपके ये साइबर सेफ्टी जो है, जैसा अपन ने डिस्कस किया अभी, साइबर सेफ्टी के अंदर दो चीजें आती हैं कि व्यक्ति जो इंटरनेट पे या कंप्यूटर को काम में ले रहा है वो साइबर क्राइम से कैसे बच सकता है और अपनी सिक्योरिटी रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकता है. ये दो पॉइंट हैं. अब उसके अंदर इसी से मिलता जुलता एक आता है साइबर सिक्योरिटी. तो साइबर सेफ्टी के अंदर तो व्यक्ति अपने आप को प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ. सो वन सेल्फ इज द पर्सन हु इज यूजिंग द कंप्यूटर रिसोर्स. एंड साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी को वी कैन से इट इज द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मींस इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन.
आप उन सूचनाओं को प्रोटेक्ट करते हो। अच्छा, इंफॉर्मेशन क्या है? बाय द वे, द लॉ स्टूडेंट मस्ट नो व्हाट यू मीन बाय इंफॉर्मेशन. Information is the any data, text, context, message, sound, voice, codes, computer program, software and database, or microfilm or computer generated microfilms. All these are informations. So what is cyber security? Cyber security is the protection of information and all the equipments, devices and information stored therein. कैसे बचाएंगे? आप किससे प्रोटेक्ट करते हो? फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस. आप उसके अंदर बिना अनुमति के प्रवेश कर सके. यहाँ के देखिए, प्रवेश की एक वो है कि प्रवेश करने का मतलब आमतौर पे जो डिक्शनरी मीनिंग रहता है, गेटिंग एंट्री इनटू, आप किसी में प्रवेश करते हैं. बट हियर एक्सेस मीन्स नॉट ओनली गेटिंग एंट्री इनटू, बट इफ एनी हाउ somebody is able to connect with or instruct the logical, then arithmetic and memory function resource of a computer. कंप्यूटर की चार ही विशेषताएं होती हैं. कंप्यूटर एक तो हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है. इट इज द हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस which performs the arithmetic, memory and logical calculations. So it has four major important parameters. It has a high-speed data processing device, it has the memory, it has the logic, it has the arithmetic. So if somebody is able to connect with or instruct the logical, arithmetic or memory functions of a computer, he gets access into that. So we have to protect the information from unauthorized access. And how do we do it? फिजिकल तो है नहीं इसके अंदर. देखिए, ये इंटेंजिबल रहता है, तो फिजिकल नहीं है. फिजिकल नहीं होने से आपको इसके अंदर जो करते हैं तो टेक्नोलॉजी को काम में लेते हैं. तो वी गेट द प्रोटेक्शन थ्रू टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस, प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसी. और क्यों करते हैं? लॉ स्टूडेंट को ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि जस्ट टू मेंटेन प्रिजर्व द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं उसके लिए वो करना. सो जैसे कंप्यूटर की डेफिनेशन जस्ट आई डिस्कस विद यू, is the electronic, magnetic, optical device or any other high-speed data process device performs logical, arithmetic, memory functions by manipulation of electronic, magnetic, or optical impulse. This includes input, output, processing, storage, computer, software, communication facilities. So that is the information definition of intelligence. आप इसके अंदर देख रहे हैं, this is all legal definition. As you law students are interested to know the legal mandate. What is the legal mandate? What is in the law? So now then comes the information technology. Cyber, when we define cyber as the characteristic of culture of computers, the information technology. Second part of the information. So what is the information technology? Actually, it is the technology of computer-based information system. Computer-based information का system का मतलब क्या हुआ? The information is created with the help of computer. आप सूचना कहाँ से, आप जब टाइप करते हैं, किसी को लेटर भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, तो चाहे आपका स्मार्टफोन हो या आपका लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, so it is the computer-based information is generated. So generated in a formalized manner by the computer. Then it is processed in the computer and communicated through the internet computer system, resource system, and it is stored in the memory of the computer. आप अपने हार्ड डिस्क के अंदर या अपने सर्वर के अंदर या डेटा सेंटर के अंदर उसको स्टोर करते हैं. सो इसके अंदर जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है इन द प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. So cyber is the characteristic of culture of information. Culture of computer आ गया, culture of information.
कुछ एक चीजें आपने यदि सुनी होंगी, जैसे वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डीप वेव, डार्क वेव। जस्ट जल्दी से अपन इनको एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी। Virtual reality is important for the law students because the Evidence Act, if you have studied the Evidence Act, या आप जब पढ़ेंगे आगे तो उसके अंदर देखेंगे आपकी जो एविडेंस है, एविडेंस दो ही तरह की होती है। वन इज द ओरल एविडेंस which should be a direct evidence under section 60 of the Evidence Act, and दूसरी होती है आपकी डॉक्यूमेंट एविडेंस। डॉक्यूमेंट शुड बी ओरिजिनल, primary is admissible. What happens in the virtual reality? देखिए, जब सेक्शन 60 ओरल एविडेंस के बारे में ये कहता है कि एविडेंस उसी व्यक्ति की मान्य होगी, डायरेक्ट एविडेंस का मतलब कि जिसने देखा, यदि कोई देखने से है कि हाँ मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने चखा, मैंने स्पर्श किया, मैंने सूंघा, द पर्सन हु परसीव्ड इट। So the oral evidence is admissible of the person who perceived it with his or with his or her senses of organs of senses, जो आपके ज्ञानेंद्रियों से जिसने महसूस किया। So how it happens when someone interacts with something, then the senses of the organs of senses get stimulated and they pass the impulses to the brain, and brain takes the decision whether it is virtual or it is real. So finally the decision is of that of brain. And who feeds the brain? The stimulated organs of senses. They pass on the masses. They pass on masses to the brain and the brain decides. So इसका यदि उल्टा लें, we get the reverse. The scientists what they did, they say the brain is receiving the impulses from the organs of senses, and organs of senses are stimulated by interacting with the environment. So why can't we create an environment in such a way that whenever the organs of senses of a person interact with the environment, they give the impulses to the brain in a way that the brain thinks they are the real, not the art. So a three-dimensional simulated environment is created with the help of computer and the computer technology, and that is created with the help of computer resource, and experience through stimulation of senses can convince the human brain to feel that the physical presence in that specific created three-dimensional stimulated environment is real. That is virtual reality. So it is virtual, but it seems to the brain that it is real. So that is a virtual. Now what is augmented reality? In augmented reality, there is something real and which is augmented with the help of computer generated images. So computer generated images is superimposed on the real thing, and it seems as an enhanced or amplified version of that reality. Reality is there, but what you see, what the brain decides is the enhanced or amplified version of reality. It is achieved through the integration of digital information or computer generated superimposed images with the use of environment in real time. Why it is important? Because for a law student, when he submits the evidence in the court, then the oral evidence must be direct evidence. But the person who is under the influence of virtual reality, so he cannot see what is real. Whatever virtual, he thinks that is real. So he deposits in the court as it is a real. जबकि ये real नहीं होते. It is the virtual thing. So that is important to know for the law student. And similarly, the augmented reality, artificial intelligence, AI.
the simulation of human intelligence in machines programmed to think like humans and mimic their acts. And machine learning is an application of this artificial intelligence. आजकल ज्यादातर जितने भी हैं सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर चलते हैं, और आने वाले समय के अंदर सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आच्छादित हो जाएगा. इंक्रिप्शन एंड क्रिप्टोग्राफी. इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी बचपन से करते रहते हैं. जब भी कोई चीज छुपा के बोलनी होती है तो कोडेड लैंग्वेज के अंदर बोल देते हैं. पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं, बच्चे कोडेड लैंग्वेज में बोलते हैं, टीचर्स भी नहीं समझ पाते हैं उसको. So the encryption is the process of encoding information that can be accessed by decoding. And similarly, cryptography is the process of converting ordinary plain text into the cyber and vice versa. Then one thing is deep web and dark web. Whenever you are completing your graduation in law, ये खूब आप सुनने को मिलेगी केसेस के अंदर डीप वेब एंड डार्क वेब. डीप वेब डार्क वेब के अंदर हिडन इंटरनेट साइट्स हैं. They are not accessible by the standard search engines. उनके लिए स्पेशलाइज्ड वेब ब्राउजर्स हैं, उन्हीं से वो कर सकते हैं. तो जितने भी जो टेररिस्ट हैं ग्रुप हैं या एंटी नेशनल ग्रुप हैं, ये सारे के सारे अपनी कम्युनिकेशन, अपनी इंफॉर्मेशन डार्क वेब और डीप वेब के अंदर करते हैं, सो दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इसकी कोई एविडेंस नहीं है. देखिए, कुल मिला के जो साइबर जो सिक्योरिटी है या साइबर डिफेंस है या साइबर सेफ्टी है, दैट इज बेसिकली द सिक्योरिटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. It starts with the information, because the information is protected, then you are safe. If your information is secure, so the cyber security is the first. If you achieve the cyber security, you have achieved the cyber safety. So now what is the computer? So as we discussed, is the computer system, network, data, computer database, software. Means all software and hardware, they are in the. So डेली लाइफ में आप देखिए कंप्यूटर रिसोर्स को काम में लेते हैं. आप इनमें से देखें कि डेली कंप्यूटर काम में लेते हैं. कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पाम टॉप, एनी वन ऑफ दीज. देन मोबाइल, स्मार्टफोन. Either we use mobile or mostly we use the smartphone. Then internet, Wi-Fi, hotspot. We are connected to either internet or Wi-Fi or hotspot. Then social media platform, ATM, debit card, credit cards, e-banking, e-wallet, Paytm, phone pay, online shopping, then email, website, mobile application. आप इनमें से यदि किसी को भी काम में लेते हैं, एक को भी या एक से अधिक को काम में ले सकते हैं, there is a definite probability you may become the victim of cyber crime. That is starting point. अब आप ये देखिए कि इसके अंदर से जो 8 कैटेगरीज हैं, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा आप या मैं जो इनको काम में नहीं लेते हैं. इसका मतलब we all are prone to cyber crime. और साइबर क्राइम को बचने के लिए आपको सबसे ज्यादा ये कि आप उस इंफॉर्मेशन को और उन रिसोर्सेज को जो काम में ले रहे हैं उनको कैसे बचा सकें, ये आपकी जानकारी के अंदर होना चाहिए. अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ रहती है. जैसे अभी अपन उस पर आते हैं कि साइबर सेफ्टी के लिए या साइबर सिक्योरिटी के लिए अपने का मूल तौर पे अपने को इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है. अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ रहती है, कहाँ से प्रोटेक्ट करें. सो पहला इसको जो एंड पॉइंट बोलते हैं, जो आप कंप्यूटर से जहाँ से आप इंफॉर्मेशन जो प्रिंट करते हैं, या तो कंप्यूटर पे करते हैं या फिर उसको कम्युनिकेशन डिवाइस स्मार्टफोन के जरिए उसको तैयार करते हैं, तो उसको हम एंड पॉइंट कहते हैं. जहां से हम शुरुआत करते हैं कि आप या तो कंप्यूटर के ऊपर आप उसको टाइप करेंगे या आपके कम्युनिकेशन डिवाइस स्मार्टफोन पे करेंगे. स्मार्टफोन के अंदर जो साधारण फोन में जो आपका मोबाइल फोन और स्मार्टफोन है, उसके अंदर 3 फर्क है.
फर्क ये है इसके अंदर, स्मार्टफोन के अंदर 3 विशेषताएं हैं। एक तो ये टच स्क्रीन है, उसके बाद में इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, और तीसरा इसके अंदर इंटरनेट एक्सेस है। इसीलिए सबसे ज्यादा हर एक के, जैसे साधारण फोन भी दे दो तो क्योंकि आप इंटरनेट से आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, और स्मार्टफोन से आप जो कंप्यूटर से काम कर सकते हो सारे काम स्मार्टफोन से कर सकते हो। मेल भेज सकते हो, फोटो भेज सकते हो, आप कोई भी वीडियो भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, हर तरह का कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। फिगर में हो, चाहे वर्ड्स में हो, चाहे आप लेटर्स में हो, डिजिट्स में हो, कैसा भी है उसको। So smartphone is a smart computer in a way, very handy and so पहली तो इंफॉर्मेशन आपके स्मार्टफोन में या कंप्यूटर में रहती है। दूसरे, इसको इंफॉर्मेशन को आप जब भेजते हैं तो किसी न किसी नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ रहता है, इंटरनेट से, इंट्रानेट से, लैन वैन, वाईफाई, हॉटस्पॉट। फिर जैसे घर में आपने यदि इंटरनेट लगा रखा है, फायरवॉल आपके यहाँ है, तो आप देखेंगे कि वहां पे स्विचेस, राउटर्स हैं, फायरवॉल हैं, स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, ये वहां उड़ती है। तीसरा, उसके बाद में प्रोसेस, जैसे ही इसको करके प्रोसेसर के अंदर जाते हैं तो वहां सर्वर के अंदर इसको प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेसर के अंदर से भी सारी इंफॉर्मेशन गुजरती है। फिर आती है स्टोरेज, या तो सर्वर में स्टोर होती है, या उसकी हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, या डेटा सेंटर में होती है, या क्लाउड में होती है। और व्हेन यू कम्युनिकेट इट, सो इट इज ऑन द ईमेल और वेबसाइट। आपने कई केसेस सुने होंगे कि ईमेल को भी बीच में मैन इन द मिडिल अटैक, बीच में उसको हैक कर लिया, एंड देन इट इज मॉडिफाइड एंड रीसेंट। So the person who receives, he gets a different email than that of the mail sent by the sender, originator से जो मेल भेजी है, so receiver के पास वो different आती है। So then the website and then application, web, mobile, database and software। अब इसके अंदर ये प्रश्न आता है कि since you have all those students और कुछ समय बाद में आप लीगल फील्ड के अंदर जाना चाहेंगे, तो लॉ के अंदर व्हाट इज द लीगल मैंडेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन? बेसिकली इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन के बाद में ही जब इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, देन इंफॉर्मेशन के अंदर द पर्सन filters the vulnerabilities from the information and then he exploits the vulnerabilities and then offense is done. So that is the trajectory. So then cyber security includes 3 parameters. One is the technology, other is the procedure, and third is the people who are using it. So technology we have discussed as it is in the endpoint or the processor net, यानी जिधर से भी आपकी इंफॉर्मेशन गुजरती है, प्रोसेस के अंदर आपको होती है, you have to protect all that, all the endpoints, processors, and similarly the procedures. So it is the IT security policies for the body corporates or the institutions. They should have the security policy or the information security management system and the person who are using it. Then समस्या क्या आई है, देखिए कि जब से कंप्यूटर के जो 4 इनकी विशेषताएं हैं, इट हैज अ हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस एंड इट परफॉर्म्स द लॉजिकल, अरिथमेटिक एंड मेमोरी रिसोर्स फंक्शंस। इन चारों के कारण ये चारों तरफ से हर एक के उसके अंदर, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका इवन आपका लीगल प्रोफेशन हो, आपका बिजनेस हो, कोई भी, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, एजुकेशन हो, हर एक के अंदर आपका कंप्यूटर रिसोर्स की और इंटरनेट वो आ गया। और 1991 में जब से इंटरनेट की, when the internet was invented, उसके बाद में तो सब जगह है इंटरनेट और कंप्यूटर हो गया। तो अब इसके अंदर डेटाज को, जिससे मैन इन द मिडिल अटैक की अपन ने बात की कि कोई व्यक्ति यदि आपने भेजा कोई मैसेज, बीच के अंदर ही उसको चुरा के कुछ बदल देता है, या मान लीजिए कोई किसी के नाम से आपको फेक आईडी के ऊपर और आपको फेक मेल भेज देता है,
तो उसके व्हाट इज द लीगल सैंक्टिटी ऑफ दैट, क्योंकि जब तक 2000 में आईटी एक्ट 2000 आया उससे पहले इसकी कोई वो नहीं थी। तो आईटी एक्ट 2000 आने से पहले बहुत सी समस्याएं थी कि आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से कम्युनिकेशन होने लग गया, ई कम्युनिकेशन, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सैंक्टिटी नहीं हुई, लीगल सैंक्टिटी नहीं हुई। फिर जो ऑफिसेज के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पेश करने के लिए कोई प्रोसीजर डेवलप नहीं। तो आईटी एक्ट 2000 इसका मूल एक्ट है और छोटा सा एक्ट है जिसमें 94 सेक्शंस हैं, 13 उसके चैप्टर्स के अंदर। एंड आज भी उसकी संख्या तो 1 to 94 ही है, लेकिन कुछ एक उसके अंदर 2008 के अंदर अमेंडमेंट्स किए गए, 31 नए धाराएं जोड़ दी गई, जो कि वो भी सारे ए बी सी डी इसी तरीके से जोड़ी हुई हैं। 9 और संख्या मतलब फिगर तो 1 to 94 है, sections added are A, B, C, like 61A, 61B, 66A, 66B, 66C, 66D, 70A, 70B. So 31 more sections are added, 4 are deleted. As on date, there are 120 sections. One is then the international legal mandate, the legal recognition for transaction carried out by means of electronic communication. International law, and UN General Assembly passed a resolution on 30th January 1997 recommended that all states give a favorable consideration to the said model law whenever they enact the law or they amend the law already made there. So that was the need. In the IT Act, if we take out the legal mandate, how to secure the information. So there are 6-7 sections, most important. They relate to the security of the information. The first thing is section 3. Section 3 is the authentication of electronic report. And similarly, section 4 is the legal recognition of electronic report. The law student must know about the legal mandate. It is given in the IT 2000. Section 4 is the legal recognition of electronic report. Section 6 is the use of electronic report. Summarily, I'll go through briefly. In the section 3 is the authentication of electronic report. यानी इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट को आप कैसे ऑथेंटिकेट करो यदि एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। सो ये कहते हैं द ऑथेंटिकेशन इज डन बाय अफिक्सिंग द डिजिटल सिग्नेचर। और डिजिटल सिग्नेचर का आजकल हर जगह डिजिटल सिग्नेचर का है। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब एक एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन है। ये टर्म्स टेक्निकल टर्म्स हैं। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का मतलब एक पेयर ऑफ कीज है। सो जो जनरेट करता है इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट, ही अफिक्सेस a seal and that is the key. He applies the key and that key is the private key, personal key. That is the personal key. Or personal key authenticates and the electronic report. This electronic report authenticated. And when it reaches to the receiver, then he applies the public key. और पब्लिक की ये बताती है उसके अंदर कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट वही है. So using public key, subscriber verifies the electronic report. It is the same electronic report. So it is the pair of key. One is the public key, one is the private key. Private key and public key, they both are unique to the subscriber and constitute a functioning of key. So that is the asymmetric crypto system. And what is the hash function? ये algorithm mapping है जो translate करता है एक sequence of bits से another sequence of bits के अंदर वो करता है.
Then section 4 is electronic legal recognition of electronic records. देखिए अब तक ये रहता था कि जितना भी सूचनाएं हैं वो कागज आधारित रहती, कागज पे तैयार की जाती, कागज से भेजी जाती थी, किसी भी दफ्तर के अंदर पेश करते थे, वो कागज में पेश करते थे, चाहे वो हाथ से लिखी हो, चाहे टाइप रिटन हो, चाहे प्रिंटेड। सेक्शन 4 ने लीगल रिकॉग्निशन दे दी है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी वही मान्यता दी जाएगी जो कि आपके टाइप रिटन, प्रिंटेड या हाथ से लिखे हुए कागज के ऊपर। ये दैट इज द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। नाउ यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, these are all the legal mandates regarding the electronic records, means the information in the electronic form. Information when passes through the computer technology, then that is the electronic record, and that is the replacement of paper. So then section 14 gives the secure electronic record, which prescribes that the security procedure has been applied to an electronic record at a specific point of time, then the record shall be deemed to be a secure electronic record. Now, in 15, this is the asymmetric crypto system. In this Act 2000, IT Act 2000, as we discussed, is a 13 chapters, 94 sections in the original Act, 31 sections added to 4 sections deleted, and now it is 120 sections. The problem with the law students is that in your 5 years course, I think there are only one paper of cyber time, and that is in the 9th semester, if I am not wrong. Because in 10 semesters and in 59 papers, out of 59 papers of 242 credits, the cyber law is only in one paper, and that too of 4 credits, and that too in 9th semester. प्रॉब्लम ये है कि आप शुरू से घर में हर आदमी कंप्यूटर को काम में ले रहा है, साइबर लॉ के डोमेन के अंदर है, और साइबर लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको ये 9th सेमेस्टर में आता है। और प्रॉब्लम दूसरी भी है जो कि फैकल्टी मेंबर्स भी इसको सही समझ पाए कि लीगल एजुकेशन है, दैट इज मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 26 इन द 3rd लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके अंदर पार्लियामेंट ने इस यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए एक एडवोकेट्स एक्ट 1961 जो बनाया, उसके अंदर ये अधिकार दिए कि लीगल एजुकेशन के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया व स्टेट बार काउंसिल यूनिवर्सिटी से मिलके, और क्या उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या पेपर्स होने चाहिए, क्या क्या चीज इंक्लूड उसके अंदर होंगे, और क्या उसका सिस्टम है, वो तय करते हैं, निर्धारित करते हैं। वर्तमान के अंदर जो 10 सेमेस्टर के अंदर 59 पेपर्स के अंदर है, उसके अंदर एक पेपर साइबर का, वो भी 9th सेमेस्टर के अंदर। कई बार मेरे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि स्टूडेंट्स हैं, ये तो हर एक व्यक्ति को आज जानने की जरूरत है। बहुत से केसेस आते हैं जब आपके एजुकेशन सब ऑनलाइन चल रही है, पिछले 2 साल से आप ऑनलाइन चल रहे हैं, और ऑनलाइन के अंदर आप साइबर अटैक्स के बहुत सारे केसेस के अंदर आप पे अटैक हुए होंगे, आपने उसको टाल दिया या आपने रिपोर्ट की या नहीं की। ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं इंटरनेट एक्सेस ही नहीं करते हैं, कंप्यूटर में एक्सेस ही नहीं करते हैं, न रहे बांस न रहे न बजे बांसुरी। लेकिन यू द लॉ स्टूडेंट मस्ट नो व्हाट इज IT। और यदि आपके 9th सेमेस्टर में है तो भी आई विल एडवाइस यू टू गो थ्रू दिस IT एक्ट। दिस इज ए वेरी coherent act, very coherent, and it is just 94 sections, so easy to understand. मैं सोचता हूँ शायद टाइम हो गया, so thank you very much. It is a technical type of thing, technical तो नहीं है उतना, लेकिन चूंकि इसके अंदर लॉ स्टूडेंट्स के लिए आपको सेक्शंस को, आपकी डेफिनेशंस को, उसको वो करना पड़ेगा। तो उससे लगता है कि आपको ये लग रहा हो
मुझे पता नहीं कि आप इसके अंदर कितना को कर पाए कि नहीं कर पाए उस हिसाब से। तो हेलो Moderators, please continue. Okay, ma'am. तो Thank you so much, sir. Yeah. Sir is saying something. Yes, sir, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपको कुछ जैसे मेरे ख्याल से 9th सेमेस्टर के अंदर ये आता है, तो मैं तो उस हिसाब से कि बेसिक कुछ साइबर लॉ के बारे में कुछ पता है या उसके वो नहीं है, मैं जानना चाहता था स्टूडेंट से। हाँ जी सर, इनका क्वेश्चन आंसर सेशन आपने बोला था ना, तो अपन ले लेते हैं क्वेश्चन आंसर इनसे। हाँ, क्वेश्चन आंसर सेशन बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। यस स्टूडेंट्स, यू मे गो अहेड। Ma'am, shall I continue? Okay. Thank you so much, sir, for enlightening and guiding us. Now we are going to have a question answer round. I request all the students who have any query to write their names in the chat box. Thereafter, we will call your names one by one, and then you can ask your query. Meanwhile, Ashmi, if you have any question, you may also ask. I know you very well. You usually have the questions, so you can go first. Sure, ma'am. Just a minute. क्वेश्चन आंसर चल रहा है। So far, I can see there are few students from University Private Law Course also. You can also raise your question, students. Anyone from our college, from our outside, any students may ask a question. Okay, just frame it and ask after Rashmi. Sir, I just had a small doubt. Like nowadays, passwords, if we keep password for any application or anything, passwords are not even safe. Then what is the alternative? The most we can do is keep passwords, but not also safe. So please unmute yourself. Now do you hear me? Hello? Yes, sir. So the strong password is required. You have to create a strong password. The requirement and how to create a strong password, shall we discuss it? अश्मी सर पूछ रहे हैं खुद कर सकते हो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना जानते हो या सर बताएं कैसे करना है? Yes, sir. जानते हो? I think yes, ma'am. Miscellaneous thing which includes characters and symbols also. Some complex thing. देखिए उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करना उसी तरीके से जैसे आप बाहर घर के ताला लगाते हैं, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के इसमें ये रहता है कि आपने यदि अपर लोअर केस आपने किया है, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में किया है, आपने जो 1 to 9 आपने वो लिया है, A to Z लोअर और अपर में लिया है, उनका मिक्स करके किया है, आप उसमें खास करके ये जो रहते हैं ना कि एक तो पासवर्ड बनाते थे जैसे नॉर्मली 1 2 3 4 वो कर लेते हैं, वो नहीं हो, एडमिन नाम हो जाता है, नाम आपका खुद हो गया, पेरेंट्स का नाम हो गया,
ये इसलिए करते हैं कि नॉर्मली ये रहता है कि साहब कहीं भूल नहीं जाए। आप इसके बजाय आपको हमेशा मोर देन 8 कैरेक्टर्स हो, अल्फाबेट्स हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, कैपिटल स्मॉल लेटर्स हो, न्यूमेरिक डिजिट्स हो, और डिक्शनरी वर्ड कभी नहीं लें। और दूसरा, कोई भी जो है आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो कोई फ्रेज लेते हैं, पास फ्रेज ले लेते हैं, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, उस तरह का वो आप बनाएं। तो उसके अंदर अगले यदि आपने ये सारे काम में लिए हैं, आपने 4 डिजिट्स तक का बनाया है, 4 कैरेक्टर्स तक का बनाया है, तो 4 कैरेक्टर वाला तो आसानी से अगला आदमी हैकर जो है वो एक्सेस कर लेता है। यदि आपने 8 कैरेक्टर्स का बनाया है तो 8 कैरेक्टर्स के अंदर देयर इज ए चार्ट, इट टेक्स द डेज कि आप उसको वो करने ब्रेक करने की। हालांकि उसके बावजूद भी इस तरह के टूल्स हैं जिसके माध्यम से उसको क्रैक कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत प्रोबेबिलिटी कम हो जाती Okay, sir. Thank you so much. Um, Now I would like to call Kunal. Sir, you can unmute yourself and ask your question. Sir, very good morning. Sir, my question is that how do we see the role of forensic science in decoding cyber attacks? Because forensic science is mainly concentrated on contemporary forms of crime, and this type of crime, which is done virtually, is changing its form day by day. Sir, what can be done to stop this in perspective of forensic cyber forensics? है। देखिए, साइबर फोरेंसिक्स जब आप कहते हैं तो साइबर फोरेंसिक्स का आप किस हिसाब से, साइंस के उस हिसाब से कह रहे हैं या लॉ के हिसाब से कह रहे हैं? क्योंकि लॉ के हिसाब से नहीं सर, आई एम आस्किंग द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो आप कैसे भी बता दें सर। पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर तभी साइबर क्राइम, जो साइबर फोरेंसिक्स को जो कहते हैं, तो उसके अंदर आपको ये रहता है कि you have to identify the digital device and the digital evidence in the digital device, and then you have to extract the digital evidence from the digital device, and then you have to procure it, transfer it, analyze it, and document it. ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहता है, एंड समली यू simultaneously you put in the court of law. That is the investigation part. So that is the forensic science, the investigation. Now, what you say that the encryption, decryption, or what was the question? Sir, how we see the role of forensic science in decoding these cyber attacks? अच्छा, रोल ऑफ फोरेंसिक साइंस इन डिकोडिंग। देखिए, आज के दिन तो डिकोडिंग का बड़ा डिफिकल्ट सा काम है। एक दफा आईआईटी कानपुर, जो सबसे ज्यादा आईआईटी के अंदर नंबर 1 है हिंदुस्तान के अंदर, आई हैपन टू मीट द ऑफिसर्स देयर, द प्रोफेसर्स देयर, द इंटरेक्शन, सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शन, एंड आई आस्क्ड देम, are you able to decrypt the data encrypted to what? So the answer was, sir, it is very difficult, we are working on that. इसके अंदर 2 चीजें हैं, आप लॉस, आप इसको समझिए कि आप डिक्रिप्ट करके क्रैक तो कर सकते हैं, डिक्रिप्ट करके क्रैक कर लिया आपने, और उसके बाद में आपने उसको कोर्ट के अंदर पेश करने के लिए यू रिक्वायर द सर्टिफिकेट, यू हैव टू गिव द सर्टिफिकेट। यदि आप उससे परिचित हैं, एविडेंस एक्ट हैं, तो 65B कैपिटल बी सबसेक्शन 4 के अंदर इट रिक्वायर्स 3 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स, देन एंड ओनली देन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो जब भी आप इसके एनक्रिप्ट जब करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं, तो डिक्रिप्ट करने के अंदर आपके पास में ऑथराइज वो नहीं है। तो ये आज के दिन ये डिफिकल्ट है, फोरेंसिक साइंटिस्ट के लिए भी डिफिकल्ट है। हालांकि टूल्स हैं उनके पास में, टूल्स की हेल्प से कर सकते हैं।
Kunal sir, is it okay? Yes, yes, perfectly fine. Thank you, Okay sir. then. Anyone else who have any kind of query, please type your name in the chat box. यदि और कोई क्वेरी जब तक आए, जब तक मैं कुणाल जी के उसको ही मैं एलोबरेट कर देता हूँ, क्योंकि कुणाल जी मुझे पता नहीं कि वेदर इज इन द फैकल्टी और No, sir, I am last year student from 5-year law college. you are Also, yeah, sir. you have Also, I completed have your seen, 5 year law में. yes, I am in last year and I am getting constant pleasure to listen you in various like sessions. So this was my question only. When last time we discussed about this thing, this part was missing. That's why I put up this question, that how we can decode this with forensic science. For instance, they have a 5 year course. The scientific, they use the scientific tools and they give the certificate. Now, one thing is very important. As you see in the section 65 capital B4 regarding the legal admissibility of the record, the electronic record or the evidence. So it requires the certificate. Now there is a question. Suppose there is a case of you have received the electronic record from the accused and it requires a certificate under section 65B4, जो कि मोहम्मद केस मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल के अंदर हुआ है. तो उसके अंदर ये रहा कि साहब जब अक्यूज के पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जो जनरेशन है, जो आपकी डिवाइस है, वो उसके पास है, अक्यूज के पास है, एंड इट रिक्वायर्स द सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑनर ऑफ दैट रिकॉर्ड. सो ही इज द ऑनर, द अक्यूज द ऑनर. अक्यूज मान लीजिए सर्टिफिकेट नहीं देता है, इट इज ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कि आप अक्यूज को उससे ये नहीं कह सकते वो अपने खिलाफ ही गवाह देगा. सो हाउ इज इट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? यदि आपके फोरेंसिक साइंटिस्ट से आप उसको डिकोडिंग करवाते हैं या वहां जो उनको सर्टिफिकेट देते हैं, देन देयर सर्टिफिकेट इज एडमिसिबल एज पर एविडेंस एक्ट. उसके अंदर 65B4 नहीं लगेगा. ये कई दफा ये प्रश्न आता है, जुडिशियल ऑफिसर के कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये प्रश्न आता है कि साहब यदि कोई मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस के केस के अंदर आप में किसी स्पाउस के उससे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से कोई एविडेंस आया है, तो आप दूसरे पक्ष को पाबंद नहीं कर सकते. पोजीशन में उनके मोबाइल फोन है, जो स्मार्टफोन है, वो स्पाउस के पोजीशन में है और एविडेंस उसमें से आपको निकली है, तो हाउ कैन यू फोर्स द स्पाउस? उसके अंदर कैसे किया जाए? तो इसका सीधा सा कायदा ये रहता है, व्हेन जुडिशियल ऑफिसर्स के पास में प्रॉब्लम आती है तो दे शुड फॉरवर्ड इट टू द फोरेंसिक साइंटिस्ट and get it examined, analyzed by the forensic scientist, and the report of the forensic scientist will be admissible. And वहाँ पे 65B4 का सर्टिफिकेट वहाँ जरूरी नहीं होगा, बाध्यता नहीं होगी उसकी एडमिसिबिलिटी. और कोई प्रश्न है? Yes, we have Dilpreet. Yeah, Dilpreet, please unmute yourself and ask. गुड आफ्टरनून सर. आई वांट टू आस्क समथिंग. जैसे मैंने सुना है कि फोन आता है, फोन उठाते बात करते और उतने में बैंक अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, तो ऐसा हो तो हम क्या कर सकते हैं और ऐसे हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ट्रू कॉलर पे मैंने कर रखा है तो कभी कभी पता चल जाता है कि फ्रॉड कॉलर नहीं उठाना, बट अगर पता ही ना चले तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ऐसे ही दिलप्रीत एक तो ट्रू कॉलर है, उसको तो अभी
Am I audible? Yes, sir. Please Dilpreet? continue. हाँ, यस सर. तो दिलप्रीत, जैसा आपने कहा कि यदि इमीडिएटली ऐसा होता है तो आप तुरंत आप अपने जहां भी बैंक अकाउंट है, जो भी आपका बैंकर है, उनके टोल फ्री नंबर के ऊपर इमीडिएटली आप वहां रिपोर्ट कीजिए। बैंक से जब भी आप कांटेक्ट करते हैं तो आप यदि तुरंत बैंक को इतला कर देते हैं कि मेरे इस बैंक अकाउंट से इतने पैसे निकल गए, तो उसको रिएम्बर्स बैंक करती है, ये बैंक की जिम्मेदारी है उसके अंदर। और यदि 30 डेज के अंदर नहीं करती है तो आप उसके बैंकिंग लोकपाल को इतला करके आपका पैसा रिएम्बर्स हो जाएगा, पैसा वापस मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न इसका आपने दूसरा क्या पूछा था? हम एक तो ये अवॉइड पूछा था कैसे कि कर क्या सकते किया हैं, हम ऐसे कॉल ही ना उठाएं. है। देखिए, कॉल तो आपको उठाना पड़ेगा। कॉल आप नहीं उठाएंगे तो उससे आप ये नहीं हो सकता कि साहब आप कॉल मत उठाओ। आप उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए। आप उसके अंदर ये कीजिए कि आप अपने जो स्मार्टफोन को काम में ले रहे हैं, उस स्मार्टफोन को किस तरीके से सेफ यूज का आपको पता होना चाहिए कि स्मार्टफोन को सेफ यूज के लिए क्या क्या आपको करना है। आपको जैसे किसी उसके अंदर ऐसी कोई एप्लीकेशन मत डालिए, अनवांटेड एप्लीकेशन मत डालिए। तो सोशल मीडिया के ऊपर आप रजिस्टर करवाते हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए कौन से सोशल मीडिया पे आप रजिस्टर करवा रहे हैं, उसका क्या फायदा है कि नहीं है उसका। और दूसरा, उसके अंदर आपको प्रॉपर पासवर्ड हर एक के लिए अलग अलग रखने चाहिए, कोई उसके अंदर वो नहीं है। यदि आप इसके अंदर आपको सेफ यूज ऑफ स्मार्टफोन, सेफ यूज ऑफ इंटरनेट, सेफ यूज ऑफ हॉटस्पॉट, कई बार ऐसा होता है कि आपने बिल्कुल सारी चीजें की लेकिन आपने कोई गेम डाउनलोड कर लिया और वो गेम आपने ऐसी जगह से डाउनलोड किया कि ऑथेंटिक नहीं है। तो ऑथेंटिक नहीं होने से उसमें क्या होगा कि उसके साथ ट्रोजन के माध्यम से आपके यहाँ पे कोई वॉइस लॉगर या कोई वो आ जाएगा और उस वॉइस कोई जो मैलिशियस कॉल है, उस मैलिशियस कॉल के कारण से आपकी सारी इंफॉर्मेशन हैकर के पास चली जाएगी। और उस सारी इंफॉर्मेशन आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन भी है, आपका बैंक का पासवर्ड भी चला जाएगा और आपके बैंक के जो डिटेल्स हैं, अकाउंट के नंबर हैं, वो डिटेल्स चले जाएंगे, उससे वो पैसे निकाल सकता है। तो इसका तो सीधा सा ही है, आप काम में तो लें उसको, ये नहीं कि नहीं उठाएं, लेकिन आप ये जरूर देख लें कि जैसे टेलीफोन आ रहा है ये कोई ऐसा तो नहीं है कोई, क्योंकि कई बार आपको टेलीफोन करते अगले आदमी वो करते हैं, जैसे स्पूफिंग की एक वो रहती है, लगता है ऐसा है कि मैम का फोन है, मैम के नंबर आपके पास सेव है तो लगता तो ऐसा है मैम का है, लेकिन वो कोई दूसरा व्यक्ति मैम के नंबर को स्पूफ करके उससे करता है। ये जरूर कई दफा समस्या हो जाती है, इसके अंदर तो आपको केयरफुल रहना है। ओके दिलप्रीत? Okay, thank you sir for the information. Okay, now Srishti, please unmute yourself and ask the question. Very good afternoon, sir. I am Srishti Sharma from second semester. Sir, our government our parliament is under the consideration of personal data protection bill. Sir, I come across an article which also talked about non-personal data, protection of non-personal data. Government is also considering it. So my question to you is, what is non-personal data? And secondly, if it is non-personal, then why there is need to protect it? Man, Srishti, if you have come across such a news, please elaborate what you mean by non-personal, because the personal sensitive data, the sensitive data and the data, they are defined in the Personal Data Protection Bill 2019. But non-personal data, what we mean by non-personal data, आप क्या उससे नॉन पर्सनल डाटा से क्या मतलब है आपका? देखिए, पर्सनल डेटा, पर्सनल सेंसिटिव डेटा 13 तरह के 13 टाइप्स ऑफ पर्सनल डेटा, सेंसिटिव डेटा डिफाइंड इन द पर्सनल सेंसिटिव पर्सनल डेटा बिल 2019। एंड इससे पहले आज के दिन जब, क्योंकि अभी एक्ट नहीं बना है, at present the personal sensitive data defined in the information technology reasonable security precaution procedure
एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा रूल्स 2011। इसके रूल 3 के अंदर सेंसिटिव पर्सनल डेटा को डिफाइन किया है, जिसमें 7 तरह के पर्सनल डेटा हैं, जिसमें आपके सारे बैंक डिटेल्स हैं, आपकी फिजिकल, आपकी फिजियोलॉजिकल, मेडिकल हिस्ट्री, देन आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सारे के सारे उसके अंदर पर्सनल सेंसिटिव डेटा के अंदर आते हैं। बाकी नॉन पर्सनल सेंसिटिव डेटा को अभी तो सेंसिटिव पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन के लिए ही बिल के अंदर बहुत दिक्कत आ रही है। आप चूंकि लॉ स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आप समझ पा रहे होंगे कि इसके अंदर क्या खासियत क्या है। जैसे पहले देखिए, सबसे पहले रूल्स 2011 के अंदर, इसके अंदर सेक्शन 43 कैपिटल ए जोड़ा हुआ आईटी एक्ट के अंदर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। और उसके अंदर ये है कि पहले तो ये रहता था कि जैसे ये क्या है कि साहब आप अपने डेटाज को अपने कंप्यूटर में, इक्विपमेंट में, रिसोर्सेज में, इसमें तो प्रोटेक्ट करो, लेकिन सपोज आपका डेटा आपकी इंस्टीट्यूशन के पास है, देन हाउ विल यू प्रोटेक्ट दैट डेटा विच इज विद द इंस्टीट्यूशन। आपके पूरे डिटेल्स हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके जो मेडिकल हिस्ट्री है, आपके बैंक अकाउंट्स में, यदि आप बैंक यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर फीस जमा कराते हो तो आप सीधे आज तो ऑनलाइन बैंकिंग से जमा करा देते हो। सारे डेटा एक दूसरे के पास है। तो यदि मान लीजिए दूसरे के पास में आपके डेटा है, या आपने ईमेल आईडी जैसे क्रिएट की है, आप कनेक्टेड हैं ऑनलाइन के अंदर, ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं तो ईमेल आईडी आप जनरेट करते हैं, ईमेल आईडी के अंदर आपके सारे पर्सनल डेटा उसके अंदर रहते हैं, वो पर्सनल डेटा आपके इंस्टीट्यूशन के पास है। अब ये कहें कि साहब इंस्टीट्यूशन से यदि मान लीजिए कोई हो गया है, कोई थर्ड पर्सन से डेटा लीकेज हो गया है, तो वो कहेंगे साहब या सामान अपने यात्री अपने सामान की रखवाली खुद करे, यू शुड टेक प्रिकॉशंस ऑफ योर। तो डेटा आपके पास थर्ड पर्सन के पास है, तो ये जब प्रॉब्लम आई तो 2008 के अंदर आईटी एक्ट वाज अमेंडेड एंड ए न्यू सेक्शन 43 कैपिटल ए वाज इंसर्टेड। अब वो ये कहता है कि आपके सेंसिटिव पर्सनल डेटा यदि कोई दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट के कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर स्टोर्ड है या उसमें एनालिसिस है, रिसीव करता है, यू शुड हैव टू हैव द रीजनेबल सिक्योरिटी प्रिकॉशंस एंड प्रोसीजर। तो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रिकॉशंस प्रोसीजर क्या है, आपके सेंसिटिव पर्सनल डेटा क्या है, ये सारे उस रूल 2011 में डिफाइन किए हुए हैं। अब उसके अंदर ये आता है कि इसके अंदर यह अदरवाइज यदि मान लो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट किया, देन दे से कि देन ही विल बी he has to pay the penalty, but the penalty was not quantified. उसके बाद में जो यूरोपियन यूनियन के 28 कंट्रीज ने, उन्होंने जीडीपीआर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2018 के अंदर बनाया, 18 में लागू हो गया मई 2018 के अंदर, लेकिन उसमें 28 कंट्रीज ही हैं और उसके अंदर क्वांटिफाई कर दिया है कि यदि रीजनेबल सिक्योरिटी प्रिकॉशन प्रोसीजर नहीं लिया जाता है तो उसकी जो पेनल्टी है दैट विल बी 20 मिलियन यूरो और 4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड वाइड टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, व्हिचएवर इज मोर। तो ये 28 कंट्रीज, उसमें तो इंडिया उसके अंदर नहीं है, यूरोपियन ईयू का वो नहीं है। तो अब उसके बाद ये आया कि इट इज नॉट कॉम्पेटेबल टू एड्रेस द डेटा लीकेज। तो अब उसमें जब प्रेशर लगा, जब 2018 के अंदर एक बिल प्रपोज किया गया, प्रिपेयर किया गया, दैट इज द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018, और उसे जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट के अंदर कृष्णा कमेटी के पास भेजा गया। जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट देके उसको बिल को वापस अमेंड करके, और अभी 2019 से ये बिल चल रहा है और आप 21 है, तो करीब करीब 1.5-2 साल हो गए इस बिल को। और हर बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए कहते हैं कि साहब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को सरकार कब बिल ला रही है, कब ये एक्ट ला रही है, कब कानून ला रही है, वो नहीं। एक बीच में आपको ध्यान हो, कुछ 4-5 महीने पहले आप इंटरमीडिएट के लिए एक रूल्स बने थे
गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएट एथिक्स फॉर इंटरमीडिएट 2021, और उसके ऊपर हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पीटर वगैरह चले गए थे कि नहीं, उसके अंदर ये बाध्यता कर दी गई थी कि रिड्रेसल ऑफिसर है 24/7 हर एक इंटरमीडिएट को रखना पड़ेगा। और उसके ऊपर उनकी समस्या ये थी कि बिल्कुल जहां भी फ्रीडम खत्म होगी तो उनका तो इनकम खत्म हो जाएगी। इसके अंदर एक खास बात, यदि आपने जब भी चर्चा की है और आप उसको, इसका मतलब आपने पढ़ा होगा, तो नहीं भी पढ़ा है, लॉ स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है कि क्या लेटेस्ट हो रहा है। तो इसके अंदर एक चीज ये की गई है कि यदि आप डेटा किसी भी आप सर्वर के अंदर रखते हो, और कहीं भी हो, चाहे कैलिफोर्निया में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे और कोई जगह हो, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर आपको एक सर्वर यहाँ रखना पड़ेगा, बाकी आप कहीं भी रखो चाहे, सो दैट द लॉ ऑफ द लैंड इज एप्लीकेबल टू देम। अदरवाइज तो उनसे जरूर, जो अभी पहले प्रश्न आया था, तो कि साहब जब पूछते हैं तो उनको वो बताते ही नहीं, वो कहते हैं साहब हमारा तो इनक्रिप्टेड है, आपका एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, so no evidence is available। तो इसलिए ये इसका डेटा प्रोटेक्शन का तो एक बराबर चल रहा है, उसके अंदर इसी कारण से प्रेशर चल रहा है अभी तक। उसके अंदर कई मंथन हो गए, एमपी की कमेटी को दिया हुआ है, वो इसको प्रोसेस कर रहे हैं। लेट अस होप जल्दी आ जाएगा एक। Srishti, is it okay? Yes. Thank you so much, sir. Okay, then let's move further. Now, I would like to call Surbhi Parak ma'am to give a vote of thanks. Thank you so much, Ashmi. Am I audible? Yes, ma'am. Greetings to everyone. I deem it a great honor to propose a vote of thanks to all who have helped us in making this webinar such a resounding success. First of all, I would like to thank our guest speaker, Dr. C.B. Sharma, sir, for gracing today's webinar. Thank you so much, sir, for your interesting and thought-provoking address. Your valuable knowledge will be of great help to our students, not just to our students, but all other students, faculty members who are present in this meeting. Now, I'm sure that they're going to be more vigilant, they're going to be more aware while using computer resources and internet. All of the qualifications, designations are very appreciable, but then I guess one thing I would like to mention personally, because I have seen sir, that sir is a great teacher. He is a great enthusiast, and he is very keen on spreading awareness about this topic. I have seen this personally. So thank you so much for that, sir, and it is really appreciable. Sir remarkably explained definition of cybersecurity as character of culture of computers, resources, information technology, virtual reality, augmented reality, artificial intelligence learning, etc. He emphasized on ingredients of the offense which a law student must know. By cyber safety, we are not just protecting ourselves, but we're reducing the risk associated with the computer resources. Sir exhaustively explained various types of cyber crimes such as honey trap, online defamation, harassment, sexual abuse, fake news, blackmailing, threatening, etc. Sir also mentioned some very interesting points such as hidden internet sites, which I guess most of us were not aware about. Sir also gave an insight about various instances from his personal life, and also from Information Technology Act, various amendments which a law student must know. Now next, I would like to express my gratitude to Dr. Yogesh sir for coordinating with us so well and for keeping us well informed about all minute details. Next, I would like to thank our principal ma'am, Dr. Vartika Arora, for her presence, her guidance and moral support throughout, and foremost for organization of this webinar. Thank you to both the moderators, Ashmi and Ishwarya.
And lastly, I would like to thank all the faculty members of RSLW family and students, not just from our college, but all other colleges and universities. Thank you so much for joining us. Over to you, Ashmi. Thank you so much, ma'am. Now, for the conclusion, I would like to hand over to Aishwarya Di. Thank you, sir, for your time and for all the knowledge and information on this topic, cyber safety and legal mandate. And at the end, I would like to thank all the gathering for attending this webinar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir.